Hello everyone. Today we are discussing about the WKB approximation method, second part, that is the connection formula. So connection formula, actually WKB approximation method is a semi-classical model. So it is so यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? It is necessary to point out that WKB method can be used in the problem in which we have two regions where WKB approximation is valid but which are separated by a classical turning point. So here suppose you have to consider this graph. This is the x-axis in which you have representing the distance, and in y-axis suppose you have to represent the potential. Okay, and this is so this is the potential graph curve. So here this dotted line is representing the total energy. Okay, so suppose you have to consider that at this point the total energy is intercepting the potential curve. Means here, why this is intersecting? Because here the total energy and potential both are equal at this point. So this point is called turning point. Suppose suppose you have to drop a perpendicular from this intersecting point towards the x-axis and naming it A. Then left side of this A point is suppose region 1 and right side of this A point is suppose region 2. So if you see this, if you saw here, then you can see that at the turning point, below the turning point or left side of this turning point, यहाँ पर क्या represent हो रहा है? ये कर्व किसको represent कर रहा है? पोटेंशियल को represent कर रहा है. So potential here, potential value is less than to this dotted point value, क्योंकि यहाँ पर ये जो कर्व है ये किसके नीचे है? डॉटेड पॉइंट के नीचे है. और डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यहाँ पर टोटल एनर्जी से हमारा पोटेंशियल क्या है, जो कि फंक्शन ऑफ एक्स है, वो क्या है? लेस है. कहाँ पर? रीजन 1 में. और रीजन 2 में क्या है? रीजन 2 में क्या है? ये जो कर्व है ये टोटल एनर्जी के डॉटेड लाइन से ऊपर है. मतलब यहाँ पर टोटल एनर्जी इज लेस दैन टू द पोटेंशियल. सो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल मॉडल हमें क्या पता है? अगर टोटल एनर्जी पोटेंशियल से ज़्यादा होगा तभी जाके पार्टिकल मूव करेगा. तो यहाँ पर ये जो रीजन 1 है, इस रीजन 1 में पार्टिकल अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल मॉडल, तो पार्टिकल क्या रह सकता है? यहाँ पर मूव कर सकता है और एग्जिस्ट कर सकता है. बट अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल मॉडल, इफ द टोटल एनर्जी इज लेस दैन टू द पोटेंशियल एनर्जी, देन देयर इज no particle will exist. Okay, so that means, but from the experimental observation that was observed that some of the particle which exist when energy is less than to the potential energy. मतलब according to the classical model, classical mechanics, ये रीजन 2 में पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर सकता है. अगर पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है मतलब यहाँ पर क्वांटम मैकेनिकल कंसेप्ट एग्जिस्ट कर रहा है. मतलब एट द इंटरसेप्टिंग पॉइंट यहाँ पर क्या हो रहा है? क्लासिकल मैकेनिक्स टू क्वांटम मैकेनिक्स हम क्या करें? मूव करें. सो दिस इज कॉल्ड द टर्निंग पॉइंट. ओके, सो एट दिस पॉइंट टर्निंग पॉइंट ई इक्वल टू वी एक्स, मतलब यहाँ पर टर्निंग, दिस पॉइंट इज कॉल्ड टर्निंग पॉइंट. सो लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये क्या है? ये है कि ये जो WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड है, ये WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड इज एप्लीकेबल फॉर द क्लासिकल रीजन एज वेल एज द क्वांटम मैकेनिकल रीजन. बट द WKB अप्रोक्सीमेशन मेथड इज नॉट एप्लीकेबल एट द इंटरसेप्टिंग पॉइंट और एट द टर्निंग पॉइंट, दैट इज E इक्वल्स टू Vx. वही हम यहाँ पर लिखेंगे. क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? इन द रीजन 1. तो क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स यहाँ पर पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर जो वेव इक्वेशन आएगा उस पार्टिकल के वेव फॉर्म के लिए वो क्या होगा? साइनोसॉइडल वेव फंक्शन होगा. बट इन रीजन 2 यहाँ पर क्या है? E इज लेस दैन टू Vx है. तो यहाँ पर जो वेव फंक्शन आएगा, क्योंकि उसका जो एनर्जी है वो धीरे धीरे डिक्रीज करेगा ऐसे, तो यहाँ पर ये जो वेव फंक्शन होगा वो एक एक्सपोनेंशियल वेव फंक्शन होगा. सो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? इन रीजन 1 द वेव फंक्शन इज साइनोसॉइडल एंड रीजन 2 वेव फंक्शन इज एक्सपोनेंशियल.
So in this condition, WKB approximation method can be applied. So from the figure in which a particle of energy E is counter a potential function, region 1 which is called classical region and region 2 which is called non-classical region or quantum mechanical region, both are separated by a classical turning point A, that is the point corresponding to E equals to Vx. So the equation connecting the WKB wave function in classical and non-classical region are given the name connection formula. So इसे क्या बोलते हैं हम? That is called connection formula. जहाँ पर कि classical region और non-classical region connect होते हैं, उस formula को हम क्या बोलेंगे? That is called connection formula.